So, as I talked in the previous video that I will discuss this controversial MCQ in the next video. So, fulfilling that promise. So, the upper one third of medulla contains, and which structure lies in the upper one third of the medulla? So, coming toward the answer, if this is your midbrain, this is the pons, and this is the medulla, and behind there is cerebellum. So we are talking about the medulla. So the medulla is divided into three portions: the upper third, the middle third, and the lower third. Keep in mind there are three portions of the medulla in which we have to discuss. So the upper portion is called olivary portion. That portion is called olivary portion. The upper third is the olivary portion of the oblongata. The middle portion the middle portion is called the medial longitudinal fasciculus decussation portion. The medial longitudinal fasciculus decussation. And the third one is the pyramidal decussation. So simple, we are having three regions: the upper third, middle third, and lower third. The upper third is olivary portion. The middle third is the medial longitudinal decussation portion. In the lower third, the middle third is the medial longitudinal fasciculus decussation, and the lower third is pyramidal decussation. Now the MCQ that is asked again and again, that is about the upper third of the medulla. So coming toward the upper third of the medulla reference. So this is the cross section of the upper third of the medulla. So this portion is the anterior portion, this is the posterior portion, and we are looking from above. I think this is clear. We have taken the cross section of the medulla at the upper third, at the olivary nucleus region, and we are looking from above, and this one is the anterior portion and this is the posterior portion. So the question is, in the upper third of portion, in the upper third of the medulla, which structure lies? So you can see this is the inferior olivary nucleus. This is the inferior olivary nucleus, and these posteriorly are the vestibulocochlear nucleus. And in the center you are having two nuclei, the nucleus ambiguous and the dorsal accessory olivary nucleus. So there is, you are not supposed to ritualize and preoccupy the mind with the wrong option. So right now, if you preoccupy your mind that whenever the upper third of medulla comes, I have to pick the vestibulocochlear nucleus. This is the most crazy thing you are supposed to do. आपने ये चीज़ दिमाग में नहीं बिठानी, आपने इस पे कंसेप्ट क्लियर करना है. तो आपने इंटीरियर अगर आ जाए, इन द अपर थर्ड द इंटीरियर पोर्शन इज फाउंड बाई, तो इसमें क्या है, इसमें आपके पास पायरामिड्स है और इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस है, दोनों है. अगर दोनों नहीं है तो इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस इज द प्रोमिनेंट एंड डिस्क्रिमिनेटिंग फीचर ऑफ द अपर थर्ड ऑफ मेडुला. अगर दोनों नहीं है तो इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, मैं इंटीरियर पोर्शन की बात कर रहा हूँ, अपर थर्ड ऑफ द मेडुला. मोस्ट ऑफ द टाइम ये पुअर रिकॉल्स होती है ना, पता नहीं MCQ का एक्चुअल स्टेम क्या है, किसी को पता नहीं, सिर्फ अपर थर्ड को रटा किया है. तो अपर थर्ड में भाई क्या है, इंटीरियर है, मिडल पोर्शन है, पोस्टीरियर पोर्शन है, कुछ ना कुछ तो क्लू ज़रूर होगी. है तो सवाल पैदा नहीं होता कि उन्होंने इस तरह दिया हो. अगर ये MCQ हो कि द अपर थर्ड ऑफ मेडुला is the most discriminating feature is the olivary nucleus, क्योंकि इसको हम olivary ट्रांसफर सेक्शन इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे मोस्ट डिस्क्रिमिनेटिंग फीचर इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस है. पॉइंट नंबर 1, द मोस्ट अगर कुछ भी ना हो, सिर्फ अपर थर्ड ऑफ मेडुला हो, तो आपने इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस पिक करना है, क्योंकि द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटिंग फीचर यही है. अगर मोस्ट इंटीरियर पोर्शन का पूछे कि द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द अपर थर्ड ऑफ मेडुला, तो उसमें आपके पास ये पायरामिड्स हैं और इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस है, बोथ है. अगर बोथ नहीं है तो फिर अलग अलग है, तो आपने इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस को टेक करना है. अगर क्वेश्चन आ जाए द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द मोस्ट सेंट्रल पोर्शन ऑफ द मेडुला, तो उसमें आपके पास ये दो चीज़ें हैं. ये दो चीज़ें क्या हैं, ये एक मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस और मीडियल लेमेनिस्कस है और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट है. तो इसमें मोस्ट सेंट्रल अगर आ जाए,
मोस्ट सेंट्रल, तो ये सेंट्रल है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस या मीडियल लेमेनिस्कस इज द मोस्ट सेंट्रल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंटीरियरली क्या है? इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस आर पायरामिड्स। अपर थर्ड में इंटीरियरली बोथ है, अगर बोथ नहीं है तो इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस आपने इसलिए पिक करना है क्योंकि ये पोर्शन, इसका नाम है ट्रांसेक्शन एट द ओलाइवरी ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर आ जाए सिर्फ इंटीरियर पोर्शन ऑफ द मेडुला एट अपर थर्ड तो इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस है। अगर आ जाए द मोस्ट इंटीरियर पोर्शन तो फिर पायरामिड्स है। इसको इसी तरह रट्टा करें, द मोस्ट इंटीरियर पोर्शन ऑफ द अपर थर्ड ऑफ मेडुला और द मिडल थर्ड ऑफ मेडुला और द लोअर थर्ड ऑफ मेडुला, ये ऊपर से नीचे तक बिल्कुल इंटीरियर आती है तो पायरामिड्स है मोस्ट इंटीरियर। अगर आ जाए इंटीरियर पोर्शन ऑफ द मेडुला तो बोथ है इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस और पायरामिड्स, लेकिन अगर दोनों नहीं है तो इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस आपने सेलेक्ट करना है। इंटीरियर अगर मोस्ट इंटीरियर आ जाए तो पायरामिड्स, अगर सिर्फ इंटीरियर है तो इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, अगर मोस्ट सेंट्रल रीजन आ जाए तो मिडिल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है। अगर मिडिल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस ना हो, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग? सेंट्रल या मिडल पोर्शन, तो उसमें आपने ये चीज़ कलेक्ट कर। मिडल पोर्शन में न्यूक्लियस एम्बिगुअस डार्सल एक्सेसरी ओलाइवरी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एम्बिगुअस डार्सल एक्सेसरी ओलाइवरी न्यूक्लियस। अगर मोस्ट पोस्टीरियर पोर्शन में आ जाए तो वेस्टिबुलो कॉक्लियर न्यूक्लियस, वेस्टिबुलो कॉक्लियर न्यूक्लियस, वेस्टिबुलो कॉक्लियर न्यूक्लियस। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अपर थर्ड ऑफ मेडुला हैज़, तो उसमें आपने इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, अगर वो नहीं है तो वेस्टिबुलो कॉक्लियर न्यूक्लियस। So I think this mystery is solved as well. So the medulla is divided into upper third, middle third, and lower third. In the middle third, what is the most striking feature? Decussation of medial longitudinal fasciculus. In the lower third, what is the most striking feature? The answer is pyramidal decussation. Pyramidal decussation. So I think this mystery is solved as well. So coming toward the two references of the previous video. This is the first reference, the skin fold. The fold of the buttocks is the transverse skin crease for the hip joint and is not caused by the lower border of the gluteus maximus. So the skin fold is not formed by the gluteus maximus, which crosses the line of the fold obliquely, and this crosses the line of the fold obliquely. So it is not formed by the gluteus maximus. This was the one reference. This is the reference for another, that the bilirubin dissociates from the albumin before entering into the liver. So it does not goes into the liver with albumin, it goes into the liver without albumin. The next reference, the primary auditory cortex, it lies in the superior temporal gyrus. You can see the statement above, along the superior temporal gyrus. So you have to, so this is something else, so you have to focus on these things, and I think I am clear right now. Thank you for watching.